वेलकम बैक गाइस। हम करेंगे साउंड क्वेश्चन वन पेपर टू 5054। बिफोर स्टार्टिंग, ये जो पास पेपर्स आप देख रहे हैं दीज आर आउट, यू कैन बाय देम। और आप मुझसे इंस्टा पे मैसेज करके यू कैन परचेज देम। दिस इज माय इंस्टा। अगर आप क्यूरियस हो, इफ यू वांट बाय इट एंड इफ यू डोंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक कि दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और जो पास पेपर्स होंगे उनके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। So yeah, and the notes will be like आपको अंडरस्टैंडिंग में आपकी इंक्रीज करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेंगे। एंड आई विल प्रोसीड विद के मैं सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दे विल बी गिवन विद एनालॉजीज एंड प्रैक्टिकलिटीज, मतलब जो रियल लाइफ में चीजें अप्लाई होती है, ठीक है ना। सो या, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन वन। A sound wave traveling in air or water contains compressions and rarefactions. Sound wave is a longitudinal wave, so it comprises of compressions and rarefactions. ठीक है ना? Describe an experiment to show that a medium is required to transmit sound waves. A medium is required. You may draw a label diagram if you wish. अच्छा, तो basically the concept is कि the sound wave होती है ना, sound like it needs a, what do you call it, a medium in order to transfer. ठीक है ना? If there is no medium, the sound, you will not hear the sound. ठीक है ना? तो for example, it can travel in air, liquid and gas. अच्छा, जो वैक्यूम होता है ना, द वैक्यूम ऑफ स्पेस जैसे हो गया, मतलब आप एटमोस्फेयर से बाहर निकलोगे, देयर विल बी अ वैक्यूम ऑफ स्पेस, तो यू विल नॉट हियर अ सिंगल साउंड देयर बिकॉज द साउंड वेव्स हैव नोवेयर टू ट्रांसफर फ्रॉम। दे हैव दे डू नॉट हैव अ मीडियम टू ट्रांसफर फ्रॉम। ठीक है ना? तो इन ऑर्डर टू support this theory, not a theory, this fact, we have this experiment which is the bell jar experiment. Bell jar experiment consists of एक जार होता है और उस जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है ना, और एक वैक्यूम पंप होता है। अच्छा, तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, और वो ना स्टार्ट की जाती है। जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स टू ऑफ कोर्स मेक अ साउंड। जब ये साउंड मेक करती है, लाइक यू हेयर इट, और फिर यू स्लोली स्टार्ट टू pump all the air out. You slowly start to create a vacuum, and आहिस्ता आहिस्ता the sound ceases to exist. The sound is dimmed down to the point कि sound अब सुनाई नहीं दे रही। So आपको सिर्फ इसके एक्शन नजर आ रहा होगा, the bell ringing, but you cannot hear it. आपको उसकी आवाज नहीं आएगी because in vacuum sound cannot travel because it does not have a medium. So yeah, sorry. So yeah, that is the question, and you can make a similar diagram to this. ठीक है ना? Equipment, e.g., evacuable container and suspended electrical bell, source of sound. अच्छा, this is the source of sound, of course. Action, ringing, sound produced, sound not heard, sound heard, and evacuate air, vacuum produced, observation, transmission, hearing of sound ceases, no sound. So eventually there will be no sound. अच्छा, आगे, when a wave is produced, when a sound wave passes through air or water, the molecules of the air or water move. Describe the motion of the molecules due to the sound wave. अच्छा, the sound wave is a longitudinal wave. Therefore, the molecules will vibrate parallel. The vibration of particles are parallel to the direction of energy. अच्छा, फिर से I'll repeat. Due to the sound wave being longitudinal, the vibration of particle will be parallel to the direction of transfer of energy. ठीक है ना? Let's go to the marking scheme. They vibrate. Okay, okay, okay. Uh, let's write that somewhere. Oh, this will be the answer. Describe what is meant by rarefaction. Rarefaction, अगर आप देख रहे हो in that, what do you call it, the diagram, जो diagram आपको नजर आ रहा है, you can see this part and you can see this part in a wave. ठीक है ना? So, rare fraction कौन सी होती है? I have told this multiple times in the previous chapter. The rare fraction is the one where there are less density. ठीक है ना? कम particles होते हैं। ठीक है ना?
they are far apart and the density is low. That is refraction. और हाँ एक और चीज, this is the compression, this is the, एक second, this is the compression, these are the rarefactions. समझ आ गए? तो let's, अच्छा, molecules are further apart than average or molecule or point where pressure density is lower than average. Let's move on. Figure 4.1 shows a dolphin. The range of audible sound frequencies for a dolphin is 75 Hz to 140 Hz. Just like a person, dolphins के पास भी होती है एक audible sound frequencies जो range होती है उसकी, right? Dolphins के पास 75 Hz to 140,000 Hz होती है. Humans के पास 20,000 Hz से 20 Hz तक होती है, ठीक है ना? In water, the speed of sound is 1500 meters per second. Calculate the smallest wavelength of sound in water that the dolphin can hear. अच्छा, हमने निकालनी है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओह माय बैड। अच्छा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेट्स सी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, जैसे जैसे ना वेवलेंथ ज्यादा होती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती है वैसे वैसे वेवलेंथ ज्यादा होती है. So in order for us to get the smallest wavelength, हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, v is equals to f into wavelength, ठीक है ना? अच्छा, in order to have the smallest wavelength, पहले wavelength को सब्जेक्ट बनाते हैं. v is equals to, एक सेकेंड, v divided by f will be equals to wavelength which we will represent by w. अच्छा, v हो गया हमारे 1500. हम फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? हमारे पास एक रेंज दी हुई है, वी हैव टू सिलेक्ट अ फ्रीक्वेंसी, हम कौन सी लेंगे? अगर आप 1500 को 75 से डिवाइड करें, व्हाट आंसर विल वी गेट? आई थिंक विल गेट 20. बट इफ वी डिवाइड 1500 फ्रॉम 140,000 विल गेट अ वेरी स्मॉल आंसर, ठीक है ना? दिस मीन्स के जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जाती है. अगर आप इसको देखें, अगर अब मैं यहाँ 200,000 लिख दूं, so the wavelength will be more smaller than the current answer, right? So that proves कि जैसे जैसे frequency ज्यादा होती है वैसे वैसे wavelength छोटी होती जाती है. And the answer will be 0.01 meters. ऐसे ही लिख दें, मीटर 0.01 मीटर ही लिख देते हैं, या 0.0170. तो yeah, this is the answer. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.